My lovely students, welcome to Mathological. In this session, we'll be discussing some general knowledge questions for your examinations. Start karte hain session. And if you have not already subscribed, make sure to subscribe to the channel and also like this session if you like the content. You can also join Telegram channel Mathological or can message me on Telegram at ADITYAKT. So, first question of this session. The famous Sanskrit works Harshcharita and Kadambari were written by which of the following? Kalidas, Banabhatt, Vishakadatt या फिर हरि सेन? Harshcharit and Kadambari. Harshcharit is about Harsh. Answer is Banabhatt. Harshvardhan. So Banabhatt is the answer. Banabhatt wrote Kadambari and Harshcharit. Now Vishakadatt is famously known for Mudra Rakshas. And Kalidas has written many epic poems. Abhigyan Shakuntalam, the most famous, which is about Dushyanta and Shakuntala. Abhigyan Shakuntalam. And Kumar Sambhav, which is about birth of Kumar Kartikeya, Kumar Sambhav. And Raghuvansh, which is about lineage of Prabhu Shri Ram, Raghuvansham. And Malavika Agnimitra. Some famous poems of Kalidas. And Kalidas was one of the Navratnas of Chandragupta II, who was also called Chandragupta Vikramaditya. Okay, आगे बढ़ते हैं. Next question. Which of the following statements is not correct? Not correct. The first battle of Panipat was fought between Babur and Ibrahim Lodi. The third battle of Panipat was fought between Marathas and Ahmad Shah Abdali. Iron was widely used by the people of Indus Valley civilization, and dancing girl statue found in Mohenjo-daro is made of bronze. Which of the following is not correct? यानी कि 3 out of them are correct and 1 out of them is not correct. The first battle of Panipat was fought between Babur and Ibrahim Lodi. This is correct. The third battle of Panipat was fought between Marathas and Ahmad Shah Abdali. This is also correct. ठीक है. तो first Panipat battle was fought in 1526 between Babur and Ibrahim Lodi, and Babur won. Second battle of Panipat was fought in 1556, and that was between Akbar and Hemu. And Akbar won that battle in 1556. And the third battle of Panipat was fought between Marathas and Ahmad Shah Abdali. And that was in 1761. Okay. एक बार बाबर अकबर मुगल एम्परर्स का एक लीनेज भी पूरा टाइमलाइन देख लेते हैं. सो बाबर फॉलोड बाय हुमायूं, फॉलोड बाय अकबर, फॉलोड बाय जहांगीर, देन शाहजहां, एंड फाइनली औरंगजेब. ठीक है. एंड बाबर का टाइम स्टार्ट हुआ फ्रॉम 1526 बिकॉज ही वॉन दिस बैटल ऑफ पानीपत 1526 to 1530. Then for Humayun 1530 to 1540, and in 1540 he was exiled. So after 1540 he came back in around 1550 probably. ठीक है, till 1556. And in 1540 he was defeated by Sher Shah Shuri. So 1539 Battle of Chausa, Humayun was defeated by Sher Shah Suri. And 1540 Battle of Kannauj, he was again decisively defeated by Sher Shah Suri.
Then probably this was 1555, not 1550. ठीक है, बहरहाल एक आइडिया लग गया होगा. ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट. इन अकबर का रेन स्टार्ट्स फ्रॉम 1556 to 1605. देन कम्स जहांगीर, देन शाहजहां, एंड फाइनली औरंगजेब. अच्छा, option statement C and D. Iron was widely used by the people of Indus Valley civilization, and dancing girl statue found in Mohenjo-daro is made of bronze. So dancing girl statue was found in Mohenjo-daro and that was made of bronze. This is correct. And Indus Valley civilization was primarily a Bronze Age civilization. It was a Bronze Age civilization. Iron was not known. Iron was not known to them. So this statement is incorrect. Iron was not widely used. Option C is the answer because that is incorrect. Okay. और ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन था. ब्रॉन्ज क्या होता है? ब्रॉन्ज इज अ एलॉय ऑफ कॉपर, कॉपर एंड टिन. लास्ट सेशन में ही डिस्कस किया था हमने, कॉपर एंड टिन का एलॉय होता है ब्रॉन्ज. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. बैटल ऑफ खानवा 1527 वॉज फॉट बिटवीन बाबर एंड राणा सांगा. देखो, वैसे भी अगर इसका फैक्ट 100% नहीं श्योर है तो भी यू नो कि बाबर वॉन 1526 बैटल. अभी लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया 1526 टू 1530, 1527 उसके ही टाइम लाइन में है, प्रॉब्ली करेक्ट. ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, बट अदरवाइज ऑल्सो पार्शियल नॉलेज से भी वी कैन गो इन दैट डायरेक्शन कि हाँ उसके टाइम लाइन पे ही है तो पॉसिबल है कि कैन बी करेक्ट. तो बिटवीन बाबर एंड राणा सांगा. ठीक है, सो दिस इज करेक्ट, बैटल ऑफ खानवा. अकबर इंट्रोड्यूस द मनसबदारी सिस्टम इन हिज एडमिनिस्ट्रेशन. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. मनसबदारी सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस बाई अकबर. English Emperor Sir Thomas Roe visited the court of Akbar. This is not correct. सारी कहानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी की है वो इसके बाद ही स्टार्ट हुआ. इंग्लिश एम्बेसडर सर थॉमस रो, बट ही हैड नॉट विजिटेड कोर्ट ऑफ अकबर, rather the court of Jahangir, and that happened in 1615. Sir Thomas Roe visited court of Jahangir in 1615. Red Fort in Delhi was constructed by Shah Jahan. This is also correct. Aurangzeb reimposed jizya on non-Muslims in 1679. This is also correct. Only third statement is not correct. So answer will be 1, 2, 4 and 5. Option D is the answer. Okay. थॉमस रो विजिट किए जहांगीर का कोर्ट, उसके बाद में फैक्ट्री स्टैब्लिश किया छोटा सा, उसके बाद में सारी कहानी स्टार्ट हुई. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. वर्ल्ड एनवायरमेंट डे is observed on June 5th. Human Rights Day is observed on April 7th. National Science Day is celebrated on February 28th. And World Health Day is observed on December 10th. So which of the following statements are correct? So definitely third statement is for sure correct. National Science Day celebrated on February 28th. Okay. And first is also correct. World Environment Day is observed on June 5th. But second and fourth statements, these are not correct. Okay. So World Environment Day, that is celebrated on June 5th. This is correct. ठीक है, और नेशनल साइंस डे ऑन Feb 28th. नेशनल साइंस डे, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे तो देखो वर्ल्ड में सेलिब्रेट हो रहा है, नेशनल साइंस डे इंडिया में ऑब्वियसली सेलिब्रेट हो रहा है, एंड दैट इज सेलिब्रेटेड ऑन February 28th बिकॉज ऑफ द इन्वेंशन ऑन February 28th 1928 by C.V. Raman. That is Raman effect. Raman effect by C.V. Raman. Raman effect is related to scattering of light. And only due to that we celebrate National Science Day on February 28th. ठीक है, और अब ह्यूमन राइट्स डे और वर्ल्ड हेल्थ डे की बात करते हैं तो ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेटेड ऑन December 10th. December 10th. And World Health Day is celebrated on April 7th. Okay, and Human Rights Day is celebrated on December 10th because of December 10th 1948 declaration of universal human rights, universal human rights declaration in UN Assembly, UN General Assembly. Okay, so answer is 1 and 3. In this case option C is the answer. Okay, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं. Next one. Arrange these foreign travelers to India in chronological order of their arrival. Xuanzang, Megasthenes, Ibn Battuta, Fayan and Thomas Roe. तो थॉमस रो का तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि 1615 इन द कोर्ट ऑफ जहांगीर, एंड ही इज द लेटेस्ट.
ठीक है, लास्ट में आया है. और सिमिलरली मेगास्थनीज केम फर्स्ट आउट ऑफ दीज in 300 BC, around in 300 BC. ठीक है, ड्यूरिंग मौर्यन एम्पायर. And Megasthenes is known for his book Indica. He wrote book Indica. Okay. Huan came during the reign of Harshvardhan in 600 AD. हर्षवर्धन. इब्न बतूता बगल में जूता लेके कब आया? ये आया 1330 में. 1330. And Fayan came in around 400 AD during the time of Chandragupta II. Chandragupta Vikramaditya basically. During time of Gupta's Chandragupta II. तो ऑर्डर क्या बना हमारा? सबसे पहले आया मेगास्थनीज 2, देन 4, देन 1. ठीक है, 2 4 1 3 5. ऑप्शन ए इज द आंसर. ओके, नेक्स्ट वन. समुद्रगुप्त is often called the Napoleon of India. Chinese traveler Fayan visited India during the reign of Chandragupta II. Kalidas was one of the Navratnas in the court of Samudragupta. Nalanda University was founded by Kumargupta I, and Gupta period is known for the development of the Nagar style of temple architecture. एक ऑर्डर में हम इसलिए ही पढ़ रहे हैं चीज़ों को ताकि हम चीज़ों को कनेक्ट कर पाएं और हमारे लिए क्वेश्चंस धीरे धीरे आसान होते जाएं, रिकॉल करना भी आसान हो. ठीक है, सो चाइनीज ट्रैवलर फायान विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड. देखो अभी देखा हमने लास्ट क्वेश्चन में ही देखा. ठीक है, फायान को कि yes, he visited during the reign of Chandragupta II, so this is correct. Kalidas was one of the Navratnas in the court of not Samudragupta, but Chandragupta II only, in the court of Chandragupta II, which is Chandragupta Vikramaditya only. So second statement, third statement is not correct. Nalanda University was founded by Kumargupta I. This is also correct. And Gupta period is known for the development of Nagar style of temple architecture. This is also correct. Similarly, first statement भी correct है कि Samudragupta is often called the Napoleon of India. Okay, so first, second, fourth, and 5. Option B is the answer. Apart from statement number 3, all other statements are correct. बाकी सारे के सारे सही है. Okay. Next question. Ornithology is the study of birds. Entomology is the study of birds and their origins. Nephrology is the study of kidneys. Mycology is the study of fungi. And dermatology is the study of digestive system. So which of the following are correct? So first is correct. Ornithology is the study of birds. This is correct. Study of words and their origins, that is called etymology. Etymology and not entomology. Okay, so this is not correct. Etymology, study of words and their origin. Nephrology is the study of kidneys. This is also correct, because nephrons are functional units of kidney. Functional units of kidney. Nephrology is study of kidneys. Mycology is study of fungi. This is also correct. But dermatology is related with skin. This is the study of skin. So this statement is not correct. Study of the digestive system is gastroenterology. ठीक है, gastroenterology. So 1, 3 and 4 are correct in this case. Option A will be the answer. Okay. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. Inventions and their inventors: printing press, penicillin, World Wide Web, and radium. And we have to connect them with Alexander Fleming, Tim Berners-Lee, Mary and Pierre Curie, and Johannes Gutenberg. ठीक है, this is Mary, not Marier. And radium was invented by Mary and Pierre Curie. Penicillin, Alexander Fleming. World Wide Web, Tim Berners-Lee, and printing press, Johannes Gutenberg. So first 4, second A, first D, second A, third B, fourth C. This is the answer. Okay. Clear है बात?
Next question. The phenomenon of El Nino generally results in which of the following? Heavy monsoon rains in India and cooling of the Pacific, warming of the central East Pacific, and suppression of the Indian monsoon, frequent cyclones in the Mediterranean, or heavy snowfall in the Himalayan region. So El Nino is basically connected with suppression of Indian monsoon, warming of central or East Pacific, and in the year when El Nino happens, Indian monsoon is suppressed, यानी कि rains are lesser, monsoon and rains are lesser. El Nino is connected with warming of the central East Pacific and suppression of Indian monsoon. So rains are lesser in India when El Nino happens. Just the opposite, when La Nina happens in the Pacific, so due to La Nina, rains in India are increased. ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज बेसिकली हैवी मानसून रेन्स इन इंडिया एंड कूलिंग ऑफ द पैसिफिक. दिस इज बिकॉज ऑफ ला नीना and due to El Nino, suppression of the Indian monsoon happens. Okay. Next one. The troposphere is the lowest layer of the atmosphere where almost all weather phenomena like rainfall and fog occur. The stratosphere contains the ozone layer which absorbs harmful UV rays, ultraviolet radiation from the sun. The mesosphere is the hottest layer of the Earth's atmosphere, and ionosphere facilitates radio communication by reflecting radio waves back to Earth. Which of the following are correct? So, as we already discussed in previous sessions, in atmosphere, lowest layer is called troposphere. Tropo यानी कि changing, or due to changing weather. ठीक है, तो all the weather activities like rainfall and fog occur in the troposphere. The first statement is definitely correct. After tropo, we have second layer. क्या है? Second layer is stratosphere. And since meso means middle, तो meso is also in the middle. ठीक है, meso is the middle layer. Then comes thermosphere, and finally comes exosphere. और ये एटमॉस्फेयर में लेयर्स है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल डिस्टिंक्शन है कि वहां पे एक लाइन खींची हुई है या शीट बिछी हुई है. ठीक है, सो बट दिस इज हाउ इट इज. ट्रैपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट है. स्ट्रेटोस्फेयर कंटेन्स द ओजोन लेयर विच अब्सॉर्ब्स हार्मफुल यूवी रेडिएशन. And third one, mesosphere is the hottest layer of the Earth's atmosphere. This is not right. Rather, mesosphere is the coldest layer. It is not the hottest. Okay, hottest layer is, as the name suggests, thermosphere. Thermosphere is the hottest layer. Ionosphere facilitates radio communication by reflecting radio waves back to Earth. अब ionosphere को हमने डिस्कस नहीं किया था most probably. तो ionosphere is basically a part of thermosphere only. ठीक है, तो ionosphere is a part of thermosphere only. ठीक है, a part of thermosphere. And the statement written, that is correct. Yes, ionosphere radiates back, I mean reflects the radio waves, and that is correct. So ionosphere is part of thermosphere. And it facilitates radio communication by reflecting radio waves back. So this statement is correct. Only third statement is not correct. 1, 2 and 4 is the answer. ठीक है, अब एक बार टेम्परेचर का भी वेरिएशन समझ लेते हैं. देखो, इन द ट्रोपोस्फेयर एज द हाइट इंक्रीजेस, जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होगा टेम्परेचर डिक्रीजेस. इन द ट्रोपोस्फेयर टेम्परेचर डिक्रीज करेगा. जैसे जैसे हाइट पे जाओगे वैसे वैसे टेम्परेचर डाउन होगा. ठीक है, कोल्डर एटमोस्फेयर होगा. इन द स्ट्रेटोस्फेयर दिस थिंग्स आर एग्जैक्टली ऑपोजिट. एज द हाइट इंक्रीजेस टेम्परेचर कम्स डाउन. टेम्परेचर इंक्रीजेस, उल्टा होता है. ठीक है, और अल्टरनेट होता रहता है. तो टेम्परेचर ट्रोपोस्फेयर में विद हाइट टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग, स्ट्रेटोस्फेयर में विद हाइट टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, मेसो में फिर से उल्टा, हाइट इज इंक्रीजिंग बट टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग. एंड थर्मो में अगेन ऑपोजिट, हाइट इज इंक्रीजिंग एंड टेम्परेचर इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. ठीक है, सो टेम्परेचर कीप्स ऑन डिक्रीजिंग इन द ट्रोपोस्फेयर एज द हाइट इंक्रीजेस. इन द स्ट्रेटोस्फेयर टेम्परेचर कीप्स इंक्रीजिंग as the height increases. In the meso again the opposite, temperature keeps on decreasing as the height increases, and thermo में फिर से temperature increase करना चालू कर देता है. So in the mesosphere basically minimum temperatures are up to -90 degrees centigrade, and in the thermosphere maximum temperatures can be even 1500 degrees centigrade. So there can be very high temperatures in the mesosphere, in the thermosphere. ठीक है, and very low in meso. Okay, ठीक है. Next question.
The Bharat Ratna is the highest civilian award of the Republic of India. Arjun Award is given to recognize outstanding achievements in the national sports, and Paramveer Chakra is the highest peacetime gallantry award. Which of the following are correct? So first is definitely correct. Bharat Ratna is the highest civilian award of the Republic of India. So order क्या है? We probably have discussed this in some previous session. भारत रत्न से पहले और बाकी कौन कौन से अवार्ड आते हैं? तो पद्म श्री, पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण. Out of the top four, Padma Shri, then comes Padma Bhushan, then Padma Vibhushan, and highest is Bharat Ratna. Okay, highest civilian award. Arjun Award is given to recognize outstanding achievement in national sports. This is also correct. And Dronacharya Award is given to coaches in sports. Arjun to players and Dronacharya to coaches. So this is also correct. Third statement, Paramveer Chakra is the highest peacetime gallantry award. This statement is not correct. Paramveer Chakra is the highest wartime award. Highest wartime gallantry award. ठीक है. परमवीर चक्र इज द हाईएस्ट वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड, यानी कि वॉर के टाइम पे ही दिया जाता है, वॉर के पे ही, वॉर में एक्सेप्शनल ब्रेवरी के लिए दिया जाता है. तो परमवीर चक्र इज बेसिकली गिवन टू ओनली डिफेंस पर्सनल, only to defense personnel. Okay, and mostly it has been given to Indian Army personnel only, apart from one case जहाँ पे कि एयरफोर्स के पर्सन को दिया गया. अदरवाइज दिस इज गिवन टू डिफेंस पर्सन ओनली. और इन कॉन्ट्रास्ट अगर हाईएस्ट पीस टाइम अवार्ड की बात करें तो हाईएस्ट पीस टाइम अवार्ड इज अशोक चक्र. ये अशोक गए थे ना शांति के लिए, तो हाईएस्ट पीस टाइम अवार्ड, पीस टाइम ब्रेवरी अवार्ड, दैट इज अशोक चक्र. ठीक है, अशोक को शांति चाहिए थी कलिंग वॉर के बाद, तो बेसिकली अशोक चक्र इज गिवन एज द हाईएस्ट पीस टाइम अवार्ड. ओके, एंड दिस इज गिवन फॉर एक्सेप्शनल ब्रेवरी इन पीस टाइम, यानी कि नॉन वॉर टाइम. ठीक है, हाई एक्सेप्शनल ब्रेवरी एक्ट इन पीस टाइम कैन बी गिवन फॉर एंटी टेररिज्म, सम एक्शन इन एंटी टेररिज्म, बिकॉज टेररिज्म इज नॉट वॉर. ठीक है, ऐसा मतलब एंटी टेररिस्ट एक्टिविटीज और एनी अदर थिंग. फॉर एग्जाम्पल नीरजा भानोत इज वन ऑफ द रेसिपिएंट्स. यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट नीरजा भानोत. ठीक है, शी सेव्ड 170 प्लस लाइव्स, 170 प्लस इंडियंस लाइव्स जब एक प्लेन हाईजैक हुआ था, और नीरजा भानोत वाज प्लेन अटेंडेंट इन दैट. ठीक है, सो शी इज प्रॉब्ली द she was probably the youngest recipient of Ashok Chakra and only female recipient when she got that award in 2003, I guess. Nirja Bhanot. ठीक है, मेजर संदीप उन्नीकृष्ण, they got Ashok Chakra. Major Sandeep Unnikrishnan, who sacrificed his life during 2008 Mumbai attack. So these are recipients of Ashok Chakra. ठीक है, Ashok Chakra can be given to defense personnel, can also be given to civilians for their exceptional bravery. नीरजा भानोत को भी मिला है. ठीक है, और ऐसे ही और भी पर्सन्स आर देयर. ओके, बट परमवीर चक्र विच इज हाईएस्ट वॉर टाइम अवार्ड, दैट इज ओनली गिवन टू डिफेंस पर्सनल. क्या ये पार्ट क्लियर है? ओके, ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून इज अप्रॉक्सिमेटली 1/6 ऑफ द अर्थ. लास्ट सेशन में ही देखा हमने, एब्सोल्युटली करेक्ट. Gravitational pull of the moon is approximately 1/6 of the Earth. Moon completes one rotation on its axis in exactly 24 hours. A solar eclipse occurs when the moon passes between Sun and Earth, and study of the moon is known as selenology. Study of the moon is known as selenology. This is also correct. Solar eclipse occurs when the moon passes between Sun and Earth. This is also correct. ठीक है, तो सन है, सन तो लार्ज है, बट मून अर्थ के पास में है. ठीक है, सो जैसे ही अर्थ और सन के बीच में मून आता है, तो सन रेज are not able to reach Earth, and that is what is solar eclipse. So third statement भी correct है. First is correct, third is correct, fourth is correct, but second statement is not correct. The moon completes one rotation on its axis in not 24 hours. No, that does not happen. Moon completes one rotation on its axis in 27.3 days. ठीक है, तो moon completes that rotation, one rotation in 27.3 days, and it is approximately the same time. In the same time,
as it takes to complete one revolution of Earth. To complete one revolution of Earth. Now think about it. It is taking same time in revolution of Earth as in rotating around its axis, and that is why all time we are able to see only exactly one face of moon. क्योंकि मून जैसे ही अपने एक्सिस पे ट्रैवल करने में जो टाइम लेता है, सेम टाइम इट टेक्स इन ट्रैवलिंग अराउंड द अर्थ. ठीक है, इन टेकिंग वन रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ, एंड दैट इज वाई वी आर ऑलवेज सीइंग वन फेस ऑफ द मून, और सेकेंड फेस हम कभी देख ही नहीं पाते. ठीक है, सो दैट इज द रीजन, बिकॉज द रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन इज टेकिंग सेम टाइम फॉर मून, 27.3 days. Okay, so 1, 3 and 4 are correct, 2 is not correct. Next question. Kathak is traditionally associated with the temples of South India. Raja and Radha Reddy are famous exponents of Kuchipudi dance. Mallika Sarabhai and Rukmini Devi are eminent Bharatanatyam dancers. Chhau is a semi-classical dance with martial origins in eastern India. And Lavani is a traditional dance form of Rajasthan known for its powerful rhythm. We've already known that Kathak is traditionally associated with temples of South India. No, definitely not. Kathak is a dance of Uttar Pradesh. Kathakali is a dance of Kerala. Kathak is a dance of Uttar Pradesh. So this is not correct. Raja and Radha Reddy are famous exponents of Kuchipudi. So even if you do not know whether they are or not, you know that Kuchipudi is a dance of Andhra Pradesh. Andhra Pradesh, and Raja and Radha Reddys are mostly in Andhra Pradesh. So statement तो correct है, but सही डायरेक्शन में जाने के लिए पहले कुछ आइडिया तो कुचिपुड़ी इज अ डांस ऑफ आंध्र प्रदेश, इजंट इट सो? एंड राजा एंड राधा रेड्डी, सो दे आर, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. फर्स्ट इनकरेक्ट है, सेकंड वाला करेक्ट है. थर्ड, मल्लिका साराभाई एंड रुक्मिणी देवी आर एमिनेंट भरतनाट्यम डांसर्स, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. दैट मल्लिका साराभाई एंड रुक्मिणी देवी, मल्लिका साराभाई नॉट फ्रॉम साराभाई वर्सेस साराभाई, बट एक्चुअली मल्लिका साराभाई, तो दे आर मल्लिका साराभाई एंड रुक्मिणी देवी, दे आर एमिनेंट भरतनाट्यम डांसर्स. ठीक है. फोर्थ वन, छऊ इज अ सेमी क्लासिकल डांस विद मार्शल ओरिजिन्स फाउंड इन ईस्टर्न इंडिया, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. And Chhau is a dance that is three forms, one in West Bengal, in Jharkhand and Odisha. Okay, so Chhau is, that is correct. Lavani is a traditional dance form of North Rajasthan, so this is not correct. It is a traditional dance form of Maharashtra. ठीक है, काफी ओल्डर मूवीज में, बॉलीवुड में देखा होगा तुमने, गानों वानों में, लावनी इज अ ट्रेडिशनल डांस ऑफ महाराष्ट्र. So this is not correct. Second, third and fourth are correct. Option D is the answer. Okay. Next one. Source and acid. Vinegar, lemon, curd and sting, and lactic acid, acetic acid, formic acid and citric acid. Vinegar is acetic acid. Curd contains lactic acid. Lemon contains citric acid. ठीक है, लेमन हो ऑरेंज हो, contains citric acid, and sting contains formic acid. So A2, B4, C1 and D3. That will be the answer. Okay. Next question. Venus is the hottest planet in our solar system. Mars is known as the red planet due to the presence of iron oxide. Saturn is the only planet in our solar system that has rings, and Mercury takes the least amount of time to revolve around the sun. The closest planet to sun is Mercury. Closest to sun is Mercury. And hence it takes shortest amount of time, least amount of time. तो ये तो करेक्ट है. ठीक है, मरकरी है, देन वीनस है कि नहीं, फिर उसके बाद में अर्थ, देन 2, 4, 6 मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून. दिस इज द ऑर्डर. ठीक है, देख चुके हैं कई सेशन में. ठीक है, मरकरी इज क्लोजेस्ट एंड दैट इज वाई इट टेक्स लीस्ट टाइम. आइडियली क्योंकि क्लोजेस्ट है सन के, और सन ही तो हीट एमिट कर रहा है, एनर्जी का सोर्स है. सो दैट इज वाई मरकरी शुड हैव बीन द हॉटेस्ट, बट मरकरी इज नॉट द हॉटेस्ट. Venus is the hottest. तो फर्स्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट है, बिकॉज ऑफ Venus is hottest because of its atmosphere. Its atmosphere makes Venus hottest. Makes it hottest due to greenhouse effect. ठीक है, greenhouse effect. So Venus is the hottest. The first statement correct है. Mars is known as the red planet, and that is because of presence of iron oxide. तो ये भी correct है.
Saturn is the only planet in our solar system that has rings. तो Saturn की जो rings है वो तो visible है, but that is not the only planet. Jupiter also has rings. ठीक है, Jupiter also has rings. Though they are faint rings, but also has rings. Similarly, Uranus and Neptune also have rings. But Saturn की rings are more prominent and more visible, but that is not the only planet with rings. Okay. तो third statement हमारा correct नहीं है. All others are correct. 1, 2 and 4 is the answer. ठीक है, क्लियर है बात. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. महात्मा गांधी रिटर्न्ड टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन जनवरी 1915. सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. चंपारण सत्याग्रह वॉज गांधीज फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन इंडिया. चंपारण सत्याग्रह, ये भी करेक्ट है कि दिस वॉज द फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ऑफ महात्मा गांधी इन 1917. जलियांवाला बाग मैसाकर took place in 1919 opposing the Rowlatt Act. We have already discussed this in previous sessions. Rowlatt Act was basically about unlawful detention. ठीक है, अनलॉफुल डिटेंशन, किसी को भी बिना अरेस्ट कर दो, अरेस्ट करके रखे रहो 2 साल तक, तो ठीक है, या जो भी है, बिना किसी पनिशमेंट नहीं मिला है, तुम्हें डाउट हुआ, तुमने सेडिशन का चार्ज लगा दिया, अरेस्ट कर लिया, तो रॉयट एक्ट के अगेंस्ट में अपोजिशन हुआ. दैट वाज जलियांवाला बाग में अपोजिशन हो रहा था, वहां पे मैसाकर हुआ. तो दैट हैपेंड इन अप्रैल 1919. सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट. करेक्ट है. That took place in April 1919, opposing the Rowlatt Act. Gandhi was the sole representative of the Congress at the first round table conference, and non-cooperation movement was called off due to Chauri Chaura incident. So fourth statement is not correct. Fifth one is also correct. Non-cooperation movement started in 1920, and 1920 में स्टार्ट हुआ, और 1922 में फेब 1922 में चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ. 4 फेब 1922, जहाँ पे पुलिस स्टेशन जला दिया गया. इन चौरी चौरा इज अ प्लेस इन गोरखपुर. ठीक है, तो ड्यू टू दैट चौरी चौरा इंसिडेंट इन 1922 नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज कॉल्ड ऑफ बाय महात्मा गांधी. ओके, ठीक है. अब फोर्थ स्टेटमेंट की बात करते हैं. तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस अकर्ड फ्रॉम 1930 टू 1932. फर्स्ट राउंड टेबल 1930, second round table 1931, and third round table conference in 1932. ठीक है, these happened in 1930, 31 and 32. अब first round table conference happened in 1930, and in 1930 civil disobedience movement was started. सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हुआ था 1930s में, डांडी मार्च के साथ में. स्टार्ट विद डांडी मार्च, नमक सत्याग्रह. And after that Namak Satyagraha, after the Rani March, when civil disobedience movement started, many of the Congress leaders were arrested, including Mahatma Gandhi. So Mahatma Gandhi was in jail during the first roundtable conference. तो कांग्रेस अपोज्ड फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. कांग्रेस फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट नहीं किया था. ठीक है, सो दैट इज वाई गांधी वाज नॉट द रिप्रेजेंटेटिव. नो वन फ्रॉम कांग्रेस participated in first roundtable conference. Now after first roundtable conference, or rather the failure of first roundtable conference, the leaders of the Congress were released. उनको रिलीज किया गया. And before second roundtable conference there was a pact between Gandhi and Irwin. So that is known as Gandhi-Irwin Pact, which happened in 1931. 1931 में गांधी इरविन पैक्ट हुआ, रिलीज किया गया लीडर्स को. गांधी इरविन पैक्ट हुआ, एंड आफ्टर दैट सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हैपेंड, एंड इन सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस पार्टिसिपेटेड. गांधी जी वाज आल्सो अ पार्टिसिपेंट. तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ही वाज अ पार्टिसिपेंट, नॉट इन फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा इस केस में? 1 और 2. क्रॉस किसको किया है ये? सेकंड. तो 1, 2, 3 एंड 5 बी इज द आंसर. ओके, और टाइमलाइन भी समझ पा रहे होगे. ठीक है, टाइमलाइन इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उससे हमें गांधी पैक भी कनेक्ट कर पाओगे कि आगे क्वेश्चन कहाँ पे आएगा, किस पे आएगा, ये थोड़ी पता है हमें. तो बाकी इवेंट्स को कनेक्ट करना भी जरूरी है, सो दैट समझ पाओ सारी बातें. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. अ बैरोमीटर इज यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर. दिस इज करेक्ट. An anemometer is used to measure the depth of the ocean. This is not correct. Anemometer is used to measure wind speed. This is used to measure wind speed and not depth of the ocean. So this is not correct.
डेप्थ ऑफ द ओशन के लिए वी हैव फैथोमीटर. फैथोमीटर. A hygrometer is used to measure humidity in the air. This is also correct. Pyrometer, pyro fire, pyrometer used to measure very high temperatures. Thermal radiation को डिटेक्ट करता है, and that is correct. Very high temperatures के लिए we use pyrometer. Seismograph is used to measure the purity of milk. Absolutely wrong. Seismograph is used to measure earthquake intensity, seismic activity, earthquake, seismic activity. And for purity of milk, we use lactometer. So first is correct. Third and fourth are correct. 1, 3, 4. Option A is the answer. Okay. Next question. Laughing gas is chemically known as nitrous oxide. Dry ice is the solid form of carbon dioxide. Baking soda is chemically known as sodium carbonate. Vinegar contains mainly acetic acid. Heavy water is chemically known as deuterium oxide. Laughing gas is known as nitrous oxide. Correct है. Dry ice solid form of carbon dioxide. Correct है. Baking soda is chemically known as sodium bicarbonate. Sodium bicarbonate, not sodium carbonate. So this is not correct. Vinegar is acetic acid and heavy water is chemically known as deuterium oxide, D2O. That is heavy water. Okay? Deuterium oxide, D2O. So 1, 2, 4 and 5 are correct. Third is not correct. Next question. Pandit Shiv Kumar Sharma is a world-renowned maestro of the Santoor. Ustad Bismillah Khan is associated with the Shahnai. Pandit Ravi Shankar was a famous tabla player. The Gharana system is a characteristic feature of Hindustani classical music. And MS Subbulakshmi was a legendary vocalist in the Carnatic tradition. Which of the following are correct? Pandit Shiv Kumar Sharma is connected with Santoor. He is a world-renowned maestro of the Santoor. Ustad Bismillah Khan is a famous Shahnai Vadak associated with the Shahnai. So ये भी correct है. Pandit Ravi Shankar was a famous tabla player. No, he was not a tabla player. Pandit Ravi Shankar was a sitar vadak, sitar player, sitar maestro. ठीक है. और पंडित रविशंकर डॉटर अनुष्का शंकर, शी इज ऑल्सो सितार प्लेयर. तो पंडित रविशंकर वॉज सितार माइस्ट्रो. तबला में वन ऑफ द वेरी फेमस विच यू ऑल माइट बी नोइंग, जाकिर हुसैन वाहताज. ठीक है. तो तबला प्लेयर वन ऑफ द फेमस एंड पंडित रविशंकर वॉज अ सितार माइस्ट्रो. घराना सिस्टम इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, ये भी करेक्ट है. और MS सुब्बलक्ष्मी वॉज अ लेजेंडरी वोकलिस्ट इन द कार्नाटिक ट्रेडिशन, ये भी करेक्ट है. तो थर्ड इज नॉट करेक्ट, ऑल अदर्स आर करेक्ट. Next question. Partition of Bengal was announced by Lord Curzon in 1905. This is correct. Partition of Bengal 1905 में हुआ और it was announced by Lord Curzon. Split between moderates and extremists occurred at the Surat session. This is also correct. In 1907, in the Surat session, moderates and extremists के बीच में split was there. Bhagat Singh and Batukeshwar Dutt threw bombs in the Central Legislative Assembly in 1929. This is also correct. Kakori conspiracy case, train robbery case took place in 1925. This is also correct. And Lala Lajpat Rai died due to lathi blows received during the protest against the Cripps Commission. Whether that is correct or not. Lala Lajpat Rai died due to lathi blows. ये part तो correct है. But those lathi blows were not received during the protest against the Cripps Commission. This is absolutely incorrect. Because Lala Lajpat Rai died due to lathi blows received during the protest against the Simon Commission. साइमन कमीशन, अब इनमें भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. साइमन कमीशन केम टू इंडिया इन 1928 एंड दिस वाज ऑल वाइट्स कमीशन. इसमें सारे के सारे सफेद गोरे लोग थे. ऑल वाइट कमीशन, गोरे लोग थे. ठीक है. ऑल वाइट्स. देयर वर नो इंडियंस इन द कमीशन एंड दैट इज व्हाई इट वाज बीइंग अपोज्ड. एंड द स्लोगन वाज साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ. बिकॉज इट वाज ऑल वाइट्स कमीशन, नो रिप्रेजेंटेशन टू इंडियंस. Then that was the problem. Indians का fate decide करना है, but no representation to Indians, and that is why the slogan was Simon go back. And on that protest, Lala Lajpat Rai was also there, and he died due to lathi blows. So ultimately, this Lala Lajpat Rai ka event is connected with Simon Commission and not Cripps Mission. Cripps Mission came to India in 1942. 1942, and this was
to seek support of Indians for World War II. Support of Indians for World War II. और इसके लिए इंडिया को प्रॉमिस किया उन्होंने, क्या प्रॉमिस किया? प्रॉमिस ऑफ डोमिनेंट स्टेटस इन ब्रिटिश कॉमनवेल्थ. डोमिनियन स्टेटस इन ब्रिटिश कॉमनवेल्थ, दैट वाज प्रॉमिस्ड इन क्रिप्स मिशन. ओके, क्या ये क्लियर? तो साइमन कमीशन 1928, क्रिप्स मिशन 1942. ठीक है, अब इसके बाद दो और शॉर्ट में देख लेते हैं. एक तो कैबिनेट मिशन एंड माउंटबेटन प्लान. कैबिनेट मिशन came in 1946 and Mountbatten Plan 1947. Cabinet mission suggested for a federal structure for India, Indian independence, federal structure with loose center. यानी कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी भी रहेगी काफी, ठीक है, विद लूज सेंटर. बट देयर वाज नो पाकिस्तान इन कैबिनेट मिशन प्लान. There was no Pakistan in cabinet mission plan. In Mountbatten plan, it was understood that partition is inevitable, so it included Pakistan. ठीक है, और पार्टीशन सारी बात और बाकी जो कहानी हुई उसके बाद वो माउंटबेटन प्लान से रिलेटेड ही है. ठीक है, कैबिनेट मिशन ऑल्सो फेल्ड बिकॉज देयर वाज नो acceptance for Pakistan, rather a federal structure with a loose center, and Mountbatten plan accepted the partition and Pakistan demand for Pakistan. ठीक है, so that is how these missions are. Simon Commission, Cripps Mission, Cabinet Mission, and Mountbatten Plan. Okay, clear? So these are all the questions that we have to discuss in this session. I believe जो भी डिस्कस वो सारी बातें क्लियर हुई होंगी और इन सारी बातों को एग्जाम में जब जरूरत पड़ेगी तो यूज भी कर पाओगे. Give feedback in the comment section and also like this session if you've not already liked this session. And that's all for this session. Bye bye. Take care and keep learning. Best of luck for the exam as well. Take care.